Somebody going to fetch my microphone? I don't know. It's somewhere. Guru Parampara Prams, please. Sahib Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve. Bhavani Charane. Devasesha Shanivari Paskati. Om Agana Dimanandasya. You found it? This is someone else. Sri Chaitanya Manavistam Stapitam Bhutale. Sri Padantaham. Sri Sham. Very less juice, Maharaj. Huh? Sagadatam Sagananagyatam Natam Shabham. Tam Savarutam Varajana Saitam Shikashtate. Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhan Vidansya. He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Korangi Radhe Vrindavaneshwari. Vishwamusute Devi Pranamami Hari Priye. Vanja Kalpa Kribrascha Kribrascha Patinam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura. Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Rama. One more time. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Samaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gaurvari Bhutale Nirvise Shashunyavari Jade Satane. So we're continuing with my interactions with Srila Prabhupada. This is a letter. Now this must have been a darshan. Yeah, this question and answer session 1969, Los Angeles, January. तो लॉस एंजलिस में 1969 का ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है लेक्चर के बाद का. One devotee named Bhakti Jana asked Prabhupada, what's the next evolutionary step for these flowers that we offer to Krishna? तो भक्ति जन प्रभु है, वो पूछ रहे हैं कि ये जो फूल पत्ते होते हैं इनका नेक्स्ट जो है जीवन क्या रहता है. Prabhupada says, from trees, the worms, do you see from the flowers are some butterflies? तो जो है पेड़ के बाद जो है कीड़े मकोड़े जो होते हैं और जैसे तितलियां होती हैं. You have seen the flowers generate some worms. तो फूलों से आपने देखे हैं कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं. And they transform into butterflies. You have seen it? और जो है वो जो बदल जाते हैं तितलियों में. तो क्या आपने ऐसा देखा है? Then gradually they'll become bird from butterfly. और फिर तितली से वो जो है एक पक्षी बनते हैं. And from different birds, then they'll become beasts, four-legged. और फिर पक्षी बनने के बाद वो जो है चार पैर वाले जानवर बनते हैं, पशु. And then from the four legs turns into two hands, just like the gorilla monkey. और चार पैर के पशु बनने के बाद वो दो पैर के पशु और दो हाथ जैसे एक बंदर में होते हैं. And then we will come to the beautiful form, और फिर हम जो है एक बहुत सुंदर देह में आते हैं, human form. जो कि है मनुष्य देह. And if you miss this opportunity again, you want to become butterfly, go on. और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर What will check you? Become butterfly. तो हमें दोबारा तितली की योनि में जाना होगा. Nature will not excuse you. और जो है प्रकृति हमें मतलब छोड़ेगा नहीं, प्रकृति के नियम बांध के रखेगा. As soon as you become butterfly, yes, come on, here he is. और जैसे ही हम तितली बन जाते हैं तो फिर वापस जो है हम प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाते हैं. Everybody laughs. तो सब जने वहाँ हंसने लगते हैं. They do not know. वो जानते नहीं हैं. They are thinking this is a
flickering lamp. Oh, let us enjoy. तो वे जानते नहीं कि ये बहुत ही अटल मतलब बहुत ही फ्लिकरिंग जीवन है Very risky civilization. और बहुत ही खतरनाक सिविलाइजेशन है। Jalaja Nava Lakshani Shasvara Laksha Vinkshate. जलजा नाम लखानी सामना लक्ष्मी। So sometimes it's called like a water on a lily leaf, very insecure situation. जैसे बताया जाता है कि ये जीवन जो है एक लिली के पत्ते के ऊपर जो है। So this transformation the Prabhupada is speaking of, he says it's instated in the Puranas. तो ये जो प्रभुपाद अब बताने जा रहे हैं ये एक वर्ड का ट्रांसलेशन है जो पुराण में है। These books were meant for human society. ये जो किताबें ग्रंथ हैं ये पूरे मानव समाज के लिए हैं। They are not reading, और वो इसे पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन meaning the people are not reading these necessary educational real science books. तो मतलब ये है कि लोग जो है ये जो असली ज्ञान प्रदान करने वाले जो ग्रंथ है उसे नहीं पढ़ रहे हैं। Instead they are reading all rascal novels and literature and sex life frauds and this and that books, junk. और इसकी बजाय ये पढ़ने के बजाय वो इधर उधर की जो फालतू की किताबें हैं वो सब पढ़ रहे हैं जो एकदम कचरा है। How they are wasting their time. और इस तरह वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। The other day, Govind Dasi, that's my god sister, was showing me one literature Hawaii picture. प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि गोविंद दासी जो महाराज बता रहे हैं उनकी गुरु बहन है तो वो एक हवाई की एक पिक्चर उनको दिखाती है श्रील प्रभुपाद जी को। The boys and girls are enjoying this surfing. तो उस पिक्चर में जो एक पुरुष और महिला जो है सर्फिंग Spending money because, you know, in order to surf, you have to wear a black rubber suit. पानी के ऊपर जो है वो सर्फिंग कर रहे थे और महाराज कह रहे हैं बहुत महंगा होता है इसको करना। Protect water and sometimes it's cold but they go surfing anyways. भले ही जो है पानी बहुत ठंडा होता है बहुत नमकीन होता है फिर भी लोग जो है उसके पानी के ऊपर सर्फिंग करते हैं। So black rubber suit and then the surfboard costs hundreds of dollars, a good hike. जो है ये जो उसका कपड़े होते हैं जो सर्फिंग के वक्त पहनते हैं और जो बोर्ड होता है वो बहुत करीब $100 से ज़्यादा। Therefore, Srila Prabhupada says, spending money, you see. और वे सिर्फ जो है अपने पैसे खर्च कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये सब। So there's no instruction how they're wasting their time, this human form of life, simply by jumping in the water. तो इसके बारे में कोई वो आदेश सुनने को तैयार नहीं है कि किस प्रकार जो है वो अपना ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर रहे हैं पानी में कूद के। And everybody laughs. और सभी जने हंसने लगते हैं। And they're thinking, I'm enjoying butterfly, you see. उन्हें लग रहा है कि जो तितली है वो एंजॉय कर रही है। So one comment I can say about surfing, see, I come from California, you know. मैं जो है कैलिफोर्निया से आया हूँ। Next to Hawaii, California is a big surfing area. और हवाई के बाद अगला जो है कैलिफोर्निया है जहाँ पे लोग आते हैं सर्फिंग के लिए। And there's a risk to that sport. और इसमें बहुत ही खतरा है इस खेल में। Along the walkway above the surfing area. तो सर्फिंग एरिया के ऊपर एक पैदल चलने का रास्ता है। There are often little small shrines. Shrine, you don't know shrine? Like a small temple. अच्छा तो वहाँ कुछ छोटे-छोटे मंदिर जैसे बने हुए हैं उसके ऊपर walkway। With a photograph and some maybe plastic flowers or something. तो उसके ऊपर कुछ फोटो कुछ चित्र बने हुए हैं। So for a surfer who died, in other words, sometimes they hit the rocks and die. उनके लिए है जो सर्फिंग करते हुए मर जाते हैं तो उनके लिए लगाए जाते हैं वहाँ पे। So poetic justice. Poetic. Poetic तो एक जो जैसे कविता करने वाले होते हैं उसके लिए। That after going to hell and suffering for their meat eating, fornication, intoxication and all that. तो अब नर्क में जाने के बाद और अपने जितने भी उन्होंने पाप किए हैं मदिरा पान ये सब किया है उसका भोगने के बाद then they can come back as a sea lion. और फिर वो जो है दोबारा आते हैं एक सी लायन के रूप में एक जानवर होता है।
Also in California, where I come from, और वो भी कैलिफोर्निया में ही है। there are many seals. तो वहाँ They're पे भी they're smooth and black. They don't need a plastic wetsuit. You see? So तो वहाँ तो जैसे जो सर्फिंग करते हैं वो लोग अब वापस आते हैं सी लायन के रूप में, और वो वहाँ कैलिफोर्निया में मौजूद भी हैं जो जिनको कुछ रबर या कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से उनकी चमड़ी ऐसी होती है कि वो पानी में सर्फिंग। better technology. तो उनकी जो है उनके पास ज़्यादा यंत्र। They're born with a nice black suit, and there's insulation, natural insulation. तो So वो जो है पैदा होते हैं उनके मतलब अपने आप से जो है शरीर पे ये सब and they're playing in the same water that the surfers are dying in. और वो उसी पानी में खेल रहे होते हैं जहाँ पे जो सर्फिंग जो इंसान कर रहे होते हैं वहाँ मरते हैं। Prabhupada's point: why wasting so much money then? प्रभुपाद जी का यही तर्क है कि ये लोग क्यों अपना पैसे इतने Taking it back as a seal. It's an attractive animal, you know, the seals. सील जो महाराज कह रहे हैं वो बहुत ही दिखने में आकर्षक जानवर है। You know what a seal looks like? You've seen the pictures? देखा है सील कैसे दिखता है? Oh. They're an attractive animal, तो ये बहुत ही आकर्षक जानवर है। and they have fun also. They're enjoying on their level of tamagun और वो अपने तमोगुण की स्थिति में बहुत आनंद ले रहे होते हैं पानी में, without the troubles for so-called human. और बिना किसी इंसानों के हस्तक्षेप के। Prabhupada's point: they have to spend so much money, प्रभुपाद कह रहे हैं इंसानों को इतना पैसे लगा के जाना होता है, and he didn't even know the specifics of the cost. Those a rubber wetsuit is expensive. The surfboard are hundreds of dollars for high quality. तो वो जो जो कपड़े पहनते हैं रबर सूट वो, और जो बोर्ड आता है वो बहुत ही $100 से भी ज़्यादा इतना महंगा आता है। So we can see, because I'm from California, I've seen so many times the seals playing in the ocean, having a good time. So no money required, no surfboard required. दूसरी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे उन्हीं इंसानों के बजाय जो है वहाँ सील भी जो है वहाँ आनंद ले रही होती है उसी पानी में, तो और उनको किसी धन की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं है। And this system, Prabhupada says, of civilization is encouraging them to do all these kinds of sense gratification without any good information. और इस प्रकार का जो सिविलाइजेशन है वो इन सबको एनकरेज करता है। What kind of condemned civilization is that? तो ये कितना कंडेम, Pulling by force to the darkness of regions of hell. तो ये जो है लोगों को नरक की तरफ भेजता है। They do not know that although hellish life is in the front, वे नहीं जानते हैं कि उनके सामने नारकीय जीवन मौजूद है। there are so many varieties of life they do not question. They don't question वो जो है इसके बारे में प्रश्न नहीं करते, where from these lives come. ये जीवन कहाँ से आते हैं। The Padma Purana says, Jana Janava Lakshmi Svara Laksha Vingshati. पद्म पुराण कहते हैं जलजानव लक्षामी स्थामना लक्ष्मी विंशति। Krimayorudra Shankya Sha. There are 900,000 species of life within the water. 900,000 जो है योनियाँ पानी में मौजूद हैं, We begin our aquatic life. और ये जो है पानी में मौजूद जानवर हैं वो सब हैं। So, on this, the scientists have figured out that life began in the water. But वैज्ञानिक लोग उन्होंने बताया कि जो है जीवन जो है पानी से शुरू they हुआ। claim it began in the water, and then gradually they sprouted legs and came to the land, बताते हैं कि जीवन जो है पानी से शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है वो जमीन पे It's very crude, but we see that the Vedas say that yes, life begins in the water. The species, the 8,400,000 species of life, the evolution begins in the water. तो ये बहुत ही क्रूड एग्जाम मतलब बता रखा है कैसे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि हम जो है इवॉल्व किए हैं पानी से, लेकिन चेतना के रूप में। Because in the beginning, the whole world was full of water. क्योंकि बिगिनिंग में जो है सारा जो योनियाँ थी वो सब पानी में मौजूद, So we had to live within the water. तो इसीलिए हमें पानी में रहना होता है। That's after the great pralaya, the flood. तो ये प्रलय के बाद के बारे The में universe बता रहे हैं fills up with water. तो
पूरा जो यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड है वो पानी से भर जाता है। Then gradually the water goes down, land becomes available. और फिर उसके बाद जो है पानी दोबारा नीचे जाता है और फिर ज़मीन। And then when the water goes down, the trees and plants begin to grow on the land. तो जब पानी नीचे जाता है तब पेड़ पौधे बाहर निकलते हैं। 2 million types of trees and plants. बहुत सारे नाना प्रकार के जो है पेड़ In, पौधे in, बाहर this, आते हैं। in this way, there are 8,400,000 species. और इस प्रकार जो है 800 मिलियन 800 मिलियन जो है स्पीशीज योनियां हैं। What do they know? The botanists? Botanist means plant specialists. तो जो लोग जो है पौधों के जो वैज्ञानिक होते हैं, Botanists and biologists, what do they know? तो जो पौधों के जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं? People should take it very seriously. लोगों को ये बहुत ही गंभीर तरीके से लेना चाहिए। It is very serious. ये बहुत ही गंभीर विषय है। This Krishna consciousness movement is not a humbug thing. Humbug, that was an old British saying. Humbug means full of nonsense. तो ये कृष्ण भावनामृत जो है ये केवल मन गढ़ंत नहीं है। It is based on authorized scriptures, Vedic literatures. ये जो है शास्त्रों पे आधारित है। Unfortunately, we have no customer for this knowledge. We have no customer. हमारे पास जो है कुछ ग्राहक नहीं है इस ज्ञान को देने के लिए। Or by mercy, now, through the mercy of Srila Prabhupada's order, his books are being distributed so people are getting some contact with this knowledge. तो अब जो है श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो उनके ग्रंथ है वो हर जगह बढ़ रहे हैं। And President Tense Prabhupada is absolutely thrilled with the youth programs around the world, especially in India. जो है यूथ प्रोग्राम से श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। There's a huge number of IYF boys now, maybe 10,000, and बहुत ही अधिक संख्या में जो है नौजवान जो है लोग जुड़ रहे हैं। I know there was something like 10 years ago, there was a mela, this was 10 years ago, and there was a mela in Pune, Pune Yatra. तो लगभग जो है 10 साल पहले बता रहे महाराज के पुणे में एक About 4,000 boys मेला लगा था जिसमें came to that one festival alone. That's just part of the result of the preaching in India. जिसमें लगभग 4,000 लड़कों ने भाग लिया था। There's a handful of progressive programs with base Bhaktivedanta Academy of Science and Education. Culture and education. Science and Education. Culture and education. Science and Culture. So बता रहे हैं कि बेस जो सेंटर होते हैं जो बताए गए हैं श्रील प्रभुपाद अभी established है वहाँ भी बहुत सारे लड़के They could be called halfway houses. That means for those who are still working or students who are not going to surrender to live in temple life, it's a first-class opportunity. तो जो लड़के लोग अगर वहाँ मंदिर में नहीं रहना चाहते भक्त लोग वहाँ भी रह सकते हैं बेस में वो It works. It's a very, very successful वो भी मंदिर की program. भांति है। In Hyderabad temple, they have the base center on the roof of the temple itself. और हैदराबाद मंदिर में बता रहे हैं कि जो मंदिर की छत पे ही जो है उन लोगों ने बेस बना रखा है। They have many, perhaps 25 students staying there. और वहाँ पे करीब 25 छात्र जो है वहाँ पे अभी रहते हैं। They have a beautiful library where you can go and study. The sun is shining in the windows, first class. और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जो है लाइब्रेरी भी है जहाँ जो छात्र लोग हैं जाके पढ़ सकते हैं। And they have their own abbreviated morning program so they can get to university on time. और वे जो है सुबह मॉर्निंग जो अपना कार्यक्रम रहता है वो भी करते हैं। So Prabhupada is, present tense, extremely pleased with these programs. This is Prabhupada's dream coming true. प्रभुपाद अभी भी जो है बहुत प्रसन्न है इस प्रोग्राम से और ये प्रभुपाद जी का स्वप्न है जो अब साथ। Trying to understand that all these concepts are basically coming from Prabhupada. He's planted the seed and the devotees are growing the garden. तो अब जो है हम देख सकते हैं कैसे जो है प्रभुपाद जी ने ही ये सब बीज बोए हैं जो भक्त निकल के आ रहे हैं उस बीज बोने से। So then this devotee named Bhakti Jan, he asked again, doesn't Krishna take any special mercy of flowers that are offered to him? तो अब ये भक्ति जन जो भक्त हैं ये दोबारा प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि जो भगवान को ये फूल अर्पित होते हैं तो भगवान देखते नहीं हैं। Prabhupada replies, yes, when it is offered to Krishna, yes. Therefore we offer flowers
to Krishna. We are doing this भगवान जो service. है ये सब देखते हैं, अगर कोई भगवान को फूल अर्पित करता है या भोग अर्पित करता We है, offer flowers to Krishna. We are doing this service to the flowers. और हम जब भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो हम ये फूलों को सेवा दे रहे हैं। The plant on which the flowers are growing is getting benefited by offering of flowers to जिस Krishna. पौधे या जिस वृक्ष पे ये जो फूल उगे हैं, हम उनको पुण्य सुकृति दे रहे हैं। Similarly, the tree which is growing fruits, when fruits are offered to Krishna, the tree benefits. जिस वृक्ष से जो है ये फल भगवान को अर्पित हो रहे हैं, वो Agyata Sukriti. Obviously, the tree doesn't know what's going on. Obviously, वृक्ष को जो है अज्ञात सुकृति मिलती है, भले ही But वृक्ष it- को पता नहीं है कि क्या हो रहा है well, the उसके tree is साथ getting के साथ। spiritual benefit because their fruits are offered to लेकिन Krishna. जो है उसे आध्यात्मिक सुकृति जरूर मिलती है वृक्ष So this को। special mercy is there. तो ये बहुत ही विशेष कृपा है उस वृक्ष पे। And we should be in the habit of benedicting living entities. और हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम दूसरे जीवों को जो है आशीर्वाद प्रदान कर सकें भगवान। There's a bit of a nuisance, bugs. तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, They have a habit of crawling into my bathroom. तो उनकी आदत है कि वो मेरे जो है बाथरूम में आ जाते हैं, If they're still alive, I chant for them. और अगर वो अभी भी जिंदा होते हैं तो मैं उनके लिए जप करता हूँ। This is parampara. ये है परंपरा। Because one time there was a bug, insect, तो एक समय बता रहे महाराज एक छोटा कीड़ा था on Prabhupada's desk. जो कि प्रभुपाद जी के डेस्क टेबल पे था। He told his servant Shrutakirta, "You see that bug? तो प्रभुपाद जी ने अपने जो सर्वेंट है उनको श्रुतकीर्ति प्रभु को कहा कि आप देख सकते हो ये कीड़े को? Yes, Srila Prabhupada. तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने कहा हाँ श्रील प्रभुपाद। I think he's hungry. तो मुझे लगता है ये भूखा है, Put him on a flower and put him outside." और इसको जो है फ्लावर पे रखो और इसको फिर बाहर रख के आ जाओ। That is Acharya. ये है आचार्य श्रील। Hariva! We should do like that. I can say I do like that. I follow that because they, they have no chance. Otherwise, if we don't give them mercy, they're just going to rot in 8,400,000 species. श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग जो है सड़ते रहेंगे 84 लाख योनियों में। So he continues to say, energy is offered to derive from Krishna and therefore should be offered to Krishna. तो जो भी हम एनर्जी, जो भी हमारी शक्ति है वो हम भगवान से प्राप्त करते हैं और उसे दोबारा हमें भगवान को भी अर्पित करनी चाहिए। Just like this water. What is water? और जैसे कि ये जल क्या है? It's taken from the ocean, derived from the ocean. और ये जल जो है हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। It goes to the sky again, turns into water and falls down. और वो जो है वही जल जो है आकाश में जाता है और बारिश के रूप में दोबारा And the river again goes to the ocean. और जो नदी में गिरता है जब वो पानी, और वो नदी जो है दोबारा समुद्र में Similarly, we have derived our energy from Krishna. उसी प्रकार हमने जो है हमारी शक्ति भगवान से प्राप्त की है। Now again, if we glide down towards Krishna, that is perfection. और यदि हम दोबारा जो है कृष्ण की ओर चले जाएं तो ये हमारा We haven't got separate energy. We haven't got separate energy तो हमारे पास कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है कृष्ण के अलावा। because we're part and parcel of Krishna. तो ये जो है कृष्ण से ही आ रही है शक्ति। Mind is coming from Krishna. The body is coming from Krishna. जो हमारा मन है, जो हमारा देह है, ये सब कृष्ण से ही आ रहा है। His material energies are coming from him, and Shastra says is non-different from him. पूरी भौतिक प्रकृति जो है भगवान से ही आ रही है और ये भगवान से अभिन्न है। So therefore, sometimes we say so-called material energy तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है सिर्फ कहने के लिए एक भौतिक शक्ति है, because Krishna boldly declares that his energy is non-different from him. कि कृष्ण ये स्वयं खुद बताते हैं कि मेरी जो शक्तियाँ हैं वो मेरे से अभिन्न हैं। We haven't got separate energy, Prabhupada says. तो हमारे पास कोई अलग से शक्ति नहीं है कृष्ण के। This is Krishna consciousness. यही है कृष्ण भावनामृत। To apply the whole energy towards Krishna, that's all. तो हमारी संपूर्ण शक्ति हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए, यही है कृष्ण भावना। That energy may be utilized in different ways, but to Krishna. और ये जो शक्ति है हम इसको भले ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन सब कृष्ण के लिए ही है। But this is Krishna consciousness. और यही है कृष्ण भावना।
Then he says, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Now, June 1971, darshan in San Francisco. जून 1970 में एक दर्शन के वक्त का एक कन्वर्सेशन है। So Prabhupada is joking with Jayananda Prabhu. और जयानंद प्रभु के साथ जो है श्रील प्रभुपाद थोड़ा हास्य कर रहे हैं। He was married for a short while. Most people don't know that. और जयानंद तो उस समय गृहस्थ जीवन में थे। You know, he had donated the money. It was $10,000, I think, some for publishing Nectar Devotion. और उन्होंने जो है लगभग $10,000 जो है दान में दिए थे। So how are you? Prabhupada says. So you're married now? तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं तो अब आप शादीशुदा हो गए हैं? So where is your marriage presentation? तो अब आपका जो है मैरिज प्रेजेंटेशन कहाँ है? So Jayananda says, pardon? He didn't understand Prabhupada's question. तो कहते हैं कि अरे श्रील प्रभुपाद दोबारा आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? Prabhupada said, when you're not married, you gave me, it's $5,000. अच्छा तो महाराज कह रहे हैं कि जब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं उनको कि जब आप शादीशुदा नहीं थे तब आपने मुझे $5,000 दिए थे। Now you're married, you must give me now $10,000. अब आप शादीशुदा हो गए, अब आप मुझको $10,000 देने। Double. डबल, Come on. दुगना कर दीजिए। Hare Krishna. So then Prabhupada asked where my brother is. तो It's प्रभुपाद very interesting because आपका भाई कहाँ है? महाराज से पूछा। oftentimes my brother and I were on different continents. तो बहुत ही अक्सर होता था कि मैं और मेरे भाई महाराज कहने के अलग अलग देशों में होते थे। He would ask me how my brother was doing, and he would ask my brother how I'm doing. This is love. अब प्रभुपाद जी महाराज से पूछते थे कि आपके जो है भाई कैसे हैं, और महाराज के जो ब्रदर जो भाई हैं उनसे पूछते थे कि महाराज कैसे हैं। So I replied that he's in London. तो यही है एक्चुअली जो प्रेम है, और महाराज ने बताया कि फिर वो जो उनके ब्रदर हैं वो अभी लंदन में है। Prabhupada wanted to know, what is he doing there? तो प्रभुपाद ने पूछा वहाँ से कि वो अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? He's building the Rath carts. तो वो जो है रथ के जो रथ यात्रा के जो बना रहे हैं। So Prabhupada was very pleased to hear that. तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे वो सुन के। Now the cart was very big, and there was a sharp curve that the cart had to go around, and it was too big to go around this sharp curve. तो जो है रथ बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसको एक बहुत ही मोड़ से जाना था, बहुत ही तीखा मोड़ था, वो एकदम तेज मोड़। So my brother swears there was a miracle when the cart got to that sharp curve. तो महाराज के ब्रदर ने बताया कि बहुत ही एक मतलब बहुत ही अचंभित घटना थी कि जब वो जो रथ है उस मोड़ पर पहुंचा। The chariot managed to slide past it. और रथ जो है बहुत हल्के मार्जिन से जो है उससे मुड़ा था। Haribo. That's Jagannath. जय जगन्नाथ। जय जय। So then he says, Narayan, that's my brother, is a nice boy. तो प्रभुपाद कहते हैं कि नर नारायण जो महाराज के भाई हैं वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं। He inquires from another devotee, is everything all right? You see, Prabhupada was so फिर प्रभुपाद जी किसी और caring. की तरफ देखते बोलते हैं कि क्या सब कुछ सही है आपके साथ? Where's your center, he asks. Where is your center? अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं? He replies, Tucson, Arizona. That's in southwest United तो States. एक जगह है ट्यूशन करके, तो वहाँ पे वो भक्त ने बताया कि मैं अभी हूँ वहाँ पे। Govind had a health problem apparently, so Prabhupada asked, how is she doing? She's very dear to, she's still alive and still active in Krishna consciousness. She's very dear to Prabhupada. गोविंद दास जी जो माता जी है वो वहाँ पे थी, तो प्रभुपाद ने पूछा कि गोविंद दास जी माता जी कैसी हैं, और वो प्रभुपाद जी बहुत ही प्रिय हैं, और वो अभी भी इस धराधाम पे मौजूद हैं। I like telling the devotees that Govindadasi was the first to plant Tulsi Devi in the West. और मैं भक्तों को पहले बता चुका हूँ कि गोविंद दास जी माता जी पहली भक्त हैं जिन्होंने पाश्चात्य देश में तुलसी महाराज जी को प्लांट किया। She was living in Hawaii, and Tulsi really likes it in Hawaii. और वे जो है हवाई में थी गोविंद दास जी माता जी, तो वहीं पे तुलसी महाराज को बहुत अच्छा लगा। Tropical climate, she's a tropical plant.
और वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो उनको बहुत अच्छा लगा तुलसी Just महारानी। like now she likes this weather here, और जैसे अभी बाहर जैसा पैदा hot मौसम and है उनको बहुत hot अच्छा and लगा। rainy. She likes it's always like that in Hawaii. तो ऐसा ही जो मौसम है हवाई में था उस समय उनको बहुत अच्छा लगा था तुलसी She महारानी। had planted tulsis on both sides of the door entrance to the temple. तो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके दोनों तरफ जो है तुलसी महारानी को वहाँ पे उन्होंने There was रखा। they were very tall tulsis, so there was a big arch of tulsi. To enter the temple room, you had to bow your head down. तो बहुत ही बड़ी जो है वो हो गई थी तुलसी महारानी, तो हमें जो है सर झुकाते हुए जाना होता था। Underneath the arch of tulsi, and chances are your head would touch the tulsi arch. तो अर्च तुलसी महाराज क्या है तो उसके नीचे से जो है निकल के जाना होता था। So then he says, Shamachandra inaugurated or began this Rath Yatra here. श्याम सुंदर प्रभु जो है उन्होंने इस रथ यात्रा का आरंभ किया था। I advised him to perform Rath Yatra on a motor car, and that was his first Rath Yatra. तो मैंने उनको बोला था कि जो है रथ यात्रा एक मोटर कार के ऊपर आयोजित की जाए और यही थी पहली रथ यात्रा। Then it came to a cart. और फिर उसके बाद जब वो एक रथ के ऊपर आया Now it is three carts. और अब जो है 3 रथ बन गए So that's very pleasing to Prabhupada. और ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रसन्न कर रहा है। But I'll tell you what's not pleasing to Prabhupada. अब मैं बताऊंगा कि प्रभुपाद जी को क्या प्रसन्न नहीं करता है। Rubber truck tires. जो है जो उसके चक्के हैं जो tell you, टायर जो है रबड़ के बने हुए हैं वो पसंद नहीं है। One day, I have a friend named Maheshwar. He lives in California. तो महाराज के एक मित्र हैं उनका नाम है माहेश्वर जो कैलिफोर्निया। He's invented a whole system of portable Roth cars. तो उन्होंने जो है एक पूरा सिस्टम बनाया है जिससे जो रथ है इधर उधर भी ले जाया जा सकता The है। whole chariot just slides onto the back of a truck, flatbed truck. तो वो जो है एक फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर भी जो है उस रथ को रखा जा सकता है। Very expert engineering. बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी कारीगरी He doesn't use truck tires. तो He uses full size, अब टायर का डिस्क्रिप्शन बता रहे महाराज। at least 2.5 meter tall Vedic style wheels. और लगभग 2.5 मीटर जो है ऊंचे जो है उसके पहिए थे। In, और वैदिक in Los Angeles Rath तरीके से Yatra, बनाए गए थे। you'll never find rubber tires. और आप कभी भी जो है रबड़ के टायर नहीं पाएंगे किसी रथ में। Neither will you find a motorized, anywhere in the United States, the land of technology, you won't find a single motorized Rath car, not one. और हालांकि यूएस जो है तकनीकी मामले में बहुत आगे है लेकिन फिर भी आप नहीं पाओगे कि वहाँ किसी रथ में जो है मोटर यूज हो रहा है रबड़ टायर यूज हो रहे हैं। But I'm dismayed because I sit on the Rath car, you know. In India, I sit on the Rath car. और महाराज बता रहे हैं कि मैं भारत में जब होता हूँ तो मैं रथ के And they have a driver, and the motor's on. The motor is always on. और मैं देखता हूँ कि उस रथ में हमेशा मोटर जो है वो हमेशा चालू रहती है। Sometimes, or frequently, not sometimes, frequently the driver is unnecessarily driving the cart with the motor. This is nonsense. Prabhupada would be angry about और that. बहुत भी बार ऐसा देखा जाता है कि जो ड्राइवर है वो Unnecessarily. रथ को चला रहा होता है मोटर के माध्यम से लेकिन Only in the worst emergency, but no, unnecessarily. लेकिन बिल्कुल इसकी आवश्यकता I could- नहीं होती तब भी जो है वो I could ड्राइवर feel, जो है चलाता I है। could feel the vibration. I could tell that the engine was going, you know, and he was unnecessarily driving it. There was plenty of rope and plenty of people, devotees pulling. It was completely unnecessary, but it was just ideas thinking he can improve. रथ के जो है कामने से मैं ये महसूस कर पाता हूँ कि जो है मोटर चल रही है तो मैं ये जरूरत नहीं होती तब भी जो है ड्राइवर उसको So संभाल सकता Prabhupada है। said 3 carts is very nice. We are improving now improve more and more. प्रभुपाद जी ने कहा कि 3 रथ हो गए तो बहुत ही अच्छा है और अब हम इसे और भी अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं। And then he said, your prasadam this year, I think it is not sufficiently distributed. Why? प्रभुपाद ने पूछा कि आप लोगों ने जो है प्रसाद इस बार बहुत अच्छे से वितरण नहीं किया, ऐसा क्यों? I asked, you mean not sufficient amount? महान ने पूछा कि आपका मतलब है कि पूरी सफिशिएंट मात्रा नहीं Not हुआ? sufficient menu? या फिर बहुत सारी वैरायटी नहीं थी? Prabhupada said, yes, not sufficient menu. तो हाँ बहुत सारी जो है वैरायटी नहीं थी जो See, प्रसाद। that year, they're distributing only a little bit of fruit for prasada Rath Yatra. उस साल जो Prabhupada है केवल जो है बहुत ही सिर्फ जो है फल जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। was upset.
प्रभुपाद काफ़ी नाराज थे इससे। He says, previously there was better prasad. प्रभुपाद ने कहा पहले तो जो है बहुत ही अच्छा प्रसाद वितरण किया जाता था। Then he comments, I've been in Moscow, there's nothing there, no fruits. प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी मॉस्को में था जहाँ पे कोई भी फल नहीं था। I could not eat fruit in Moscow. और मैं वहाँ कोई भी फल नहीं खा सका मॉस्को में। So now in your country, Krishna has given so nice flowers, fruits. आपके देश में जो है कृष्ण ने इतने सारे प्रकार के फूल और फल दिए हैं। So Prabhupada's commenting that there's no shortage in America, unlike Russia. So what is this nonsense that skimpy? Skimpy means not enough prasad. तो प्रभुपाद से कहते हैं कि जब आपके देश में इतना सब कुछ फूल फल दिया है तो फिर ये ऐसी मूर्खता क्यों है कि आप लोगों ने this was नहीं किया प्रसाद के रूप में। under the communist government. Prabhupada's commenting that Russia was very proud of advancement, that there's no fruit, no flowers, no Vaishnavas, no freedom. So how do you call that civilization? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो है रशिया में जो है मॉस्को में वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ फिर भी जो है कोई वैष्णव नहीं थे, कोई फल नहीं थे, कोई फूल नहीं थे। तो ये कैसी सिविलाइजेशन है, ये कैसा समाज है? So Prabhupada tells a story about Durga worship in Bengal. तो प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं दुर्गा की पूजा के बारे में बंगाल में। So Durga is asking her devotee, the goddess, she's asking the devotee, my dear boy, are you happy? तो माता दुर्गा जो है वो एक अपने भक्त से पूछती है कि क्या आप खुश हैं? Yes, I'm very happy. Simply two things wanting. तो वो जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता है। What is this? She says. तो माता दुर्गा पूछती है क्या है वो दो चीज़ें? I have no food, he says. I have no clothing. तो मेरे पास जो है खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। So Prabhupada says, so in this story, just see, try to understand, I'm happy, but two things missing, no food, no clothing. तो हम देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि मैं खुश हूँ, बस मेरे पास यही दो चीज़ें नहीं है, मैं खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। That is happiness, no food, no clothing. और वो खुश है कि उसके फिर भी खुश है, भले ही उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। But the Russian under the communist government, no food, और लेकिन जो रशिया जो है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के no clothing, वहाँ पे ना तो but they're very proud of their technology. और भले ही उनके पास बहुत ही तकनीकी and no freedom in those days. It was under the communist tyranny. तो उस समय जो है रशिया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर था। But you know that Prabhupada went, and devotees went, there was a book fair in Moscow. और आप सब जानते होंगे जब प्रभुपाद जी जब मॉस्को में During the iron grip of the communist. बुक फेयर था जो कि कम्युनिस्ट लोगों के पूरे हाथ के अंदर। So devotees went there dressed in karmic clothes most probably. तो जो भक्त लोग थे वो उस बुक फेयर में गए जो कि पूरा And they had a display of Prabhupada's books. और उन भक्तों ने जाके जो है श्रील प्रभुपाद जी की किताबें वहाँ दिखाई। The communist police could not anticipate the significance of the feature of those books. और ये जो है कल्चरल मूवमेंट था, तो कल्चरल फेस्टिवल था, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इतना हस्तक्षेप नहीं किया जब वो ये पुस्तकें बांटा थे, जानते नहीं थे कि इसका आगे क्या प्रभाव। Books would eventually conquer Russia and drive out the tyranny. They didn't know that. इन्हीं ग्रंथों ने पूरे रशिया में रिवॉल्यूशन किया और फिर आगे जो है इस गवर्नमेंट को भी हटा दिया। Then he says, but in your country, U.S., it may also come that there's shortage of flowers, fruits, and like that. लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं आपके देश में भी ये हो सकता है कि जो है इसकी कमी हो जाए खाने की और फूल और फलों की। So before everything may change, you've got plenty now in America. That may change. So before it changes, use all these things for. ये सब चीज़ें जो है कभी भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए परिवर्तन होने से पहले अभी जब मौजूद है तो उसको भगवान की सेवा में। Fruits, flowers, other nice things. Use it for spreading Krishna consciousness before it's too late. एकदम ताज़े जो है फल फूल लाके भगवान सेवा में लगाइए और भगवान का प्रचार कीजिए। Spread it all over your country.
पूरे आपके देश भर में इसका प्रचार कीजिए, वितरण कीजिए। Don't slip down. That is my request. और जो है दोबारा नीचे नहीं गिरिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। He said, Prabhupada says, whatever I could do, I have done. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो भी कर सकता था मैंने किया। Now it's up to you to spread this movement all over the world. अब ये जो मूवमेंट है ये सब आपके हाथों में है, अब आप लोगों को उसको प्रचार करना है पूरे विश्व में। Don't go away. कभी भी दूर न जाइए, Because there were some devotees were leaving. क्योंकि उस समय जो है कुछ भक्त थे जो छोड़ के जा रहे थे। So, therefore, tendency to leaving. Tendency to leaving. तो ये जो है प्रवृत्ति जो है ये जो छोड़ के जाने की, The verse says, I ask you, no, this is all nonsense. This is Maya's peeping. तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ जो है माया का प्रहार है। Why are you working so hard for sentiment, chanting and dancing? आप लोग जो है इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं सिर्फ इस जपने के, भगवान का नाम जपने के लिए और नृत्य कर रहे हैं। Come on, take the service, meaning a job. Be happy with your wife and children. तो This ये is जो है माया का जो है प्रहार उदाहरण क्या है कि माया कहती है कि कम ऑन आप जो है खुश रहिए अपने पारिवारिक जीवन में। this is Maya. ये है माया। I did not ask my students to marry, he says, to मैंने become अपने छात्रों को नहीं कहा कि आप जो है शादी कीजिए become lost childs. और एक खोए हुए बच्चे की तरह बन जाइए। I want to give them some facility मैं जो है उनको कुछ फैसिलिटी देना चाहता हूँ, because you cannot do without wife. क्योंकि आप लोग जो है बिना पत्नी के नहीं रह सकते। But now I see that some of them are slipping away. लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ गृहस्थ जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। This is not to be done. No. ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। So the thing is, 1969, when Shamachandra, Malati, and the others, when they went to London and opened the temple, 1969 में जब श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी वे लंदन मंदिर में गए और वहाँ जब मंदिर की स्थापना की, Jamuna Gurudas, यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, Prabhupada was very pleased. They were householders, so he was thinking, if householders can do this, it's very good. तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे कि जब वो गृहस्थ लोग थे फिर भी जो है उन्होंने मंदिर का स्थापना किया। तो प्रभुपाद So he was very enlivened for a short while. तो प्रभुपाद जी जो है थोड़े समय के लिए बहुत ही खुश थे इससे। But then he started getting reports about how many of the householders are full of nonsense. लेकिन उनको जब प्रभुपाद जी को बाद में जब है इसके बारे में पता चलने लगा कि कैसे जो है इतने सारे गृहस्थ जो Then है he गलत काम कर रहे हैं, started discouraging marriage if they could not maintain their Krishna consciousness. और फिर प्रभुपाद जी ने जो है डिस्करेज किया इसको जो है वैवाहिक जीवन को, जब उन्हें पता चला कि जो है बहुत लोग कृष्ण भावना में नहीं रख पा रहे हैं गृहस्थ जीवन में। Then he comments, sannyasi does not just mean having no wife and children. तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि सन्यासी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो है हमारे पास पुत्र नहीं है या पत्नी नहीं है। He has nothing to possess except Krishna, that is sannyas. और सन्यासी का अर्थ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है कृष्ण के सिवाय। One should know that I'll simply have Krishna, that's all. और उसके बाद अपने कहने के लिए कुछ भी नहीं है केवल कृष्ण के अलावा, Then he has sannyas. वो है सन्यासी। Of course, a few things can be used, like this laptop computer we're using. They didn't exist when Prabhupada was on the planet, but he would have liked laptop computers if they're useful in Krishna service. आज कह रहे हैं कि हम देखते हैं ये लैपटॉप और ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी भी जब ये अगर टेक्नोलॉजी देखते यंत्र तो वो प्रभुपाद जी खुश होते हैं कि ये जो है किस प्रकार कृष्ण की सेवा में लग रहा है। I have nothing to serve, I have no one to serve except Krishna. प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सेवा करने के लिए कृष्ण के अलावा। Proper mentality with sannyas. प्रभुपाद की जो मानसिकता थी वो सन्यासी की थी। But if you serve Krishna, you will serve everyone. लेकिन अगर कृष्ण की सेवा करेंगे तो आप सभी की सेवा करेंगे। I was teaching this Indian man the same process. तो मैं एक भारतीय व्यक्ति को यही प्रोसेस सिखा रहा था। If you pour water on the tree, the root of the tree, then the branches, leaves, flowers, everything benefits. यदि आप एक पौधे या वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उसके पत्ते, फूल और सब जो है खिल जाते हैं।
So therefore, by serving Krishna, everyone is served. तो इसीलिए यदि आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो सभी जनों की सेवा हो जाती है, All service included. सभी सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। He says, suppose I'm Indian, I cannot go to your country. I came to your country. Why I came to your country in this old age? मैं एक भारतीय हूँ लेकिन मैं आपके देश में आया इस बुढ़ापे की उम्र में, ऐसा क्यों है? That is service. To be Krishna conscious, that's the best service. क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत जो है यही सबसे उत्तम सेवा है जिसकी की जाती है, Without any distinction of caste, creed, country, बिना color. किसी जाति पात के। No, everyone should have Krishna. नहीं, सभी के पास जो है कृष्ण होने चाहिए। So try to understand that Prabhupada was spreading this mission in Adhoya Bhav. प्रभुपाद जी जो है इस कृष्ण भावना संघ को जो है फैला रहे थे एक औदार्य भाव में, कृपा के। Mahaprabhu had two basic moods in his pastimes. चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य जो है भाव थे अपने लीलाओं के Adhoya अंदर। Bhav पहला है औदार्य भाव means distribution. और मतलब है कि कृपा बांटना। So based out of Jagannath Puri, then he went to South India, and that was 100% Adhoya Bhav. जगन्नाथपुरी जाने के बाद महाप्रभु जो है दक्षिण भारत की ओर गए, तो वो जो है संपूर्ण तरीके से एक औदार्य भाव में लीला थी। He made millions of devotees in South India, दक्षिण भारत में महाप्रभु ने लाखों की संख्या में भक्त बनाए, even in a place like Sri Rangam, which Sri Vaishnava stronghold. और ऐसी स्थान पे भी जहाँ पे श्रीरंगम, जहाँ श्री वैष्णव स्थित हैं, They were amazed to see his kirtan, so people just melted, everybody melted, even all these, in those days, Paka Brahmins, you वो know. जो श्री वैष्णव जो उस समय जो अखंड पंडित जो ब्राह्मण लोग भी थे, वो लोग भी जब महाप्रभु का नृत्य देखते थे तो वो भी पिघल जाते थे। We think we're doing good if we can make a few hundred devotees, but Mahaprabhu was making millions personally. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ 100 की संख्या में भक्त बनाएंगे, लेकिन महाप्रभु ने तो लाखों की संख्या में भक्त बनाए थे। He was converting even followers of Ramanujacharya. तो महाप्रभु जो है इवन उनको भी कन्वर्ट कर रहे थे जो रामानुजाचार्य के फॉलोअर हैं, शिष्य हैं। Even followers of Madhvacharya, माधवाचार्य के भी जो शिष्य who were हैं, keeping a different mood from Gaudiya Vaishnavas. उनका भी भाव भले ही गौड़ीय वैष्णव से अलग रहता था, लेकिन महाप्रभु के प्रभाव से सब गौड़ीय वैष्णव। Many of the South Indians don't accept that Madhvacharya is in our line. They don't accept because भारत में बहुत सारे लोग मानते नहीं कि मध्वाचार्य जो है वो हमारी परंपरा में भी आते हैं। the Gaudiya mood is so different from Madhvacharya. He was more, he was strictly Aishwarya गौड़ीय Bhav. जो मूड है, जो भाव है, वो बहुत ही अलग है जो मध्वाचार्य का भाव था, इसीलिए ऐसा कहते हैं दक्षिण भारत में लोग। It was Madhavendra Puri that introduced the mood of Mahaprabhu. क्योंकि माधवेंद्र पुरी जो थे वो थे जिन्होंने महाप्रभु का जो भाव है वो हमारे संप्रदाय में Ecstatic love. लेके आए थे, Centered around the holy name of Radha and Krishna. और प्रेममयी सेवा जो है श्री श्री राधा और कृष्ण That's की Radha, Madhava Puri. और माधवेंद्र पुरी के ने दी थी वो। So then people ask, what was your magic? प्रभुपाद से पूछते हैं लोग कि आपने क्या जादू किया है? Prabhupada said, I have got this magic that I don't tell lie. प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरे पास ये जादू है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, I don't make this rascal as God. और मैं किसी झूठ को भगवान नहीं बताता, Only that God is Krishna. That is my magic. और केवल जो भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, यही मेरा जादू है। Hariva. I don't bluff people. मैं जो है लोगों को धोखा नहीं देता। Here is God. See God, be with God, serve God. That is यहाँ my है business. भगवान, उनकी सेवा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। Why God should be unseen. और क्यों भगवान जो है लोगों को नहीं दिखने चाहिए? You see Krishna, if Krishna says, I am the taste of water while you're drinking water, always think, oh, here is Krishna. भगवान कृष्ण आप देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पानी का जो है टेस्ट हूँ, तो जब आप जल पी रहे हैं तब आप देखिए कि ओ यहाँ पे कृष्ण As soon as you मौजूद है। see sunshine, moonshine, you should think, oh, here is Krishna. जब आप सूर्य की किरणें देखते हैं, चंद्रमा की किरणें देखते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ है कृष्ण। Because he says, I am the light of the sun and the moon. So we have to take that. क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं जीवन हूँ सूर्य और चंद्रमा का, तो Even आपको इस as तरह देखना चाहिए। Krishna appears to the phenomena of nature, we have to accept, तो we have to कृष्ण take that, download that. कृष्ण जब बताते हैं कि मैं कैसे इस प्रकृति में मौजूद हूँ, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमारे हृदय में उतारना चाहिए। Several times we've mentioned the Isha Upanishad says, this is
that the Supreme Lord War is far away, and बहुत so बार मैं बता चुका हूँ, पहले भी ईशोपनिषद बता रखा है कैसे जो है fools भगवान जो only है बहुत fools, दूर भी हैं, fools only take that part of the mantra. और जो जो मूर्ख लोग होते हैं वो केवल इसी चीज़ को समझते हैं कि भगवान बहुत दूर हैं, Because then Ishopanishad says he's far away, but he's very near as well. So we have to take that part. और पर ईशोपनिषद आगे ये भी कहता है कि भले ही वो बहुत दूर है लेकिन वो सबसे निकटतम भी मौजूद है, He's very near in the पूरी तरीके taste, से लेना है। and the light of the sun and the moon, the taste of water. These are practical ways in which Krishna is very तो near. ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, भगवान जैसे बता रहे हैं कि मैं टेस्ट हूँ जल का और मैं ये सूर्य और चंद्रमा का सोर्स हूँ, That's Vaishnava meditation. और ये है एक वैष्णव का चिंतन है। Generally, in this age, we don't sit down in lotus position and twist in a jalebi form. तो इस एज में जो है हम लोग इस तरीके से नहीं बैठ जाते कि एक लोटस की तरह और एक जलेबी की तरह जो है अपने अंगों को मोड़ते हैं। If you want to do a few asanas for health reasons, that's fine. तो भले ही आप में से कुछ लोग ऐसा करते हो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, वो ठीक है, But that does not replace pure Krishna लेकिन consciousness. ये जो है कृष्ण भावनामृत को रिप्लेस नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। So Prabhupada is pointing out we must see Krishna in these different ways. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कृष्ण को इन सब चीज़ों, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से देखना आना चाहिए। 7th chapter of Bhagavad Gita, Prabhupada is promoting how Krishna appears in the phenomena of nature. 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे जो है इस भौतिक प्रकृति में भगवान प्रकट होते हैं। So this is a very important movement. Take it seriously and spread it. तो ये जो है, ये जो संघ है कृष्ण भावना संघ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लीजिए और इसे। Then he has Vishnu Jana read from the Gita, और फिर प्रभुपाद जी ने विष्णु जन महाराज को कहा कि आप गीता से पढ़िए। 7th chapter. 7वां अध्याय। O son of Kunti, Arjun, I am the taste of water, the light of the sun and the moon. हे कुंती पुत्र, मैं ही जो है सूर्य का तेज हूँ और जो पानी का टेस्ट भी मैं ही हूँ। The syllable Om and the Vedic mantras. और जो ये ओम जो शब्द है वो भी मैं ही हूँ। I am the sound and ether. और मैं ही जो आकाश का भी ध्वनि में मैं ही हूँ। So then Prabhupada comes, now who is not drinking water? Everyone is drinking water. प्रभुपाद जी फिर पूछते हैं कि कौन यहाँ पे है जो पानी नहीं पी रहा? सब पानी पीते हैं। Taste of water is Krishna. So who has not seen Krishna, they say, can you show me God? जो पानी का जो टेस्ट है वो भगवान कृष्ण है, तो लोग कहते हैं कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं। Here is God, taste of यहाँ water. है भगवान, भगवान इस पानी की जल के टेस्ट में अवेलेबल मौजूद है, तो आप देखिए। Here is God's sunshine. यहाँ पे भगवान मौजूद है, देखिए जो सूर्य की किरणें हैं। But they cannot understand Krishna's present in these different लेकिन forms. मूर्ख लोग जो है समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण कैसे इन सब चीज़ों में मौजूद है। But because to understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead requires लेकिन जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझने के लिए requires many thousands of years tapasya to understand. बहुत वर्षों, हजारों वर्षों की तपस्या की जरूरत है भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। Bahanam janmanam ante jnanamam prapajate vasudeva sarvamiti sarvamahatma sudurva. भगवद गीता का वर्ष है, बहुनाम जन्मनाम इनको बता रहे हैं। बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं भगवान कृष्ण को जानने के लिए। Manusyanam sasheshi kashidyarti siddhaye. मनुष्य नाम सर्वश्रेष्ठ, Out of many thousands of people, one may हजारों लोगों में कोई एक, one may be interested in making this life perfect. कोई एक जो है इसमें इंटरेस्ट रख सकता है कि मेरे को आध्यात्मिक प्रगति करनी है। And those who attain perfection, out of many thousands of them, one can understand Krishna. और कुछ जो इसमें से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से कुछ, उन हजारों लोगों में से कोई एक भगवान कृष्ण को यथारूप समझ। So to understand Krishna is not an easy job. तो इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना कोई आसान कार्य नहीं है। If one who understands, here is Krishna, here is Radharani, let me serve. That तो अगर कोई position, ये समझ पाता है कि यहाँ है कृष्ण, यहाँ है राधा रानी, मुझे very सेवा करने exalted, दीजिए, exalted position, तो ये जो है बहुत ही उच्चतम स्थिति है। यदि कोई ऐसा समझ not पाता है, ordinary position. और ये कोई नौसिखिया नहीं। So try to understand that everybody sitting here today, according to this explanation by Prabhupada, has performed severe austerities in past lives to come to this point of becoming a devotee of Krishna. It's not easy. Of course, it's the mercy of Prabhupada. तो बहुत जो है पूर्व जन्मों की तपस्या लगी है। जब यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के साथ हैं,
लेकिन ये हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की असीम कृपा भी है। But still, to come to this point requires some pious activity. लेकिन इस बिंदु तक आने के लिए भी हमें कुछ सुकृति की जरूरत है। To attempt to surrender to और Krishna शरणागति शरण लेने के लिए हमें कुछ requires सुकृति a की background of pious activities. और हमें उसके लिए जरूर एक सुकृति की आवश्यकता है। There's one story about devotees who were walking in a park. एक कहानी है जिसमें एक बार जो भक्त लोग हैं वो एक पार्क में जा रहे होते हैं। There was one homeless man on a park bench, और एक व्यक्ति होता है जिसके पास घर नहीं होता है, वो वहाँ पे लेटा होता है। very unbathed, very dirty. बहुत ही गंदगी में जो है स्थित रहता है वो व्यक्ति। So the devotees nicknamed him Pigpen, pig, like a pig. वो जो है एकदम सुअर की भांति लग रहा था वो व्यक्ति। So he seemed like a lost cause. तो वो जो है एकदम एक गंदा सा व्यक्ति लग रहा था। But Prabhupada was walking along there and he saw that seemingly unfortunate homeless man. और प्रभुपाद जी जो है वहाँ से जा रहे थे तब प्रभुपाद जी ने देखा इस बेघर व्यक्ति को And bestowed his mercy on him. और उस पे जो है श्री प्रभुपाद ने अपनी कृपा प्रदान करने का सोचा। So devotees started bringing him to the temple तो by the mercy of जो Prabhupada. भक्तों ने जब उस भक्त को जो है मंदिर लाना शुरू किया और धन्य- ये है प्रभुपाद जी की कृपा। Then he said he wanted to move into the temple. और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं मंदिर में आना चाहता हूँ। Devotees were very doubtful. How can we let this guy live in the temple? और जो भक्त लोग थे वो बड़े संशय में थे, इस व्यक्ति को हम कैसे मंदिर में आने अलाउ कर सकते हैं। Well, they cleaned him up and gave him a bath and Vaishnava dress, everything. और जब भक्तों ने उसे पूरा शेव कर दिया, पूरा सफाई कर दिया, नहला धुला दिया, और Because- वैष्णव अटायर में आ गया वो। He was very committed to living in the temple. और वो जो है बहुत ही उसने निश्चय कर रखा था मंदिर में आने के लिए। So the devotees agreed. They had a lot of doubts, you know. तो भले ही भक्तों को बहुत संशय था, लेकिन फिर भी उसका कमिटमेंट देख के जो भक्तों ने उसे अलाउ किया। One day, he told the devotees, "I want to distribute books." तो एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि भक्तों से कि मैं जो है पुस्तक वितरण करना चाहता हूँ। Devotees were thinking, "This will never work." तो भक्तों को लगा था नहीं ये कैसे, ये तो व्यक्ति नहीं कर सकता। They gave him Bhagavad Gitas. तो भक्तों ने उसे कुछ भगवत गीता He went out and was selling Bhagavad Gitas. और फिर वो जो नया व्यक्ति था वो बाहर गया और उसने भगवत गीता Something like 30 Bhagavad Gitas he sold. और लगभग 30 भगवत गीता उसने वितरण कर दी। He came back with a big stack of money. और फिर जो है बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी के साथ वो वापस आया। The devotees thought maybe he stole it, the money. तो भक्तों को लगता है इसने चुरा लिया है ये लक्ष्मी किसी से। They couldn't imagine how he was collecting so much. तो उनको समझ नहीं आ रहा था इसने इतने कैसे जो है इकट्ठा कर लिया है लक्ष्मी। You know, he was not real smart, you know, this guy. तो ये जो व्यक्ति था जो नया भक्त था ये बहुत ही चतुर नहीं था। So the devotee said, "What are you telling these people? How are you selling so many मैंने books?" पूछा उस व्यक्ति से कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को इस पुस्तक वितरण के वक्त। He said, "I just show them the picture of Prabhupada. और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ जो है श्रील प्रभुपाद जी की I say- उनको दिखा देता हूँ I say, Prabhupada saved me." और मैं कहता हूँ कि ये प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। तो That's all he was saying, simple guy, तो हमें लग रहा था कि ये बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। selling 30 Bhagavad Gitas. Amazing. He went on to 30 भगवत गीता उसने जो है वितरण कर दी। he went on to become quite a big book distributor. और फिर वो आगे चल के एक बहुत ही बड़े पुस्तक वितरक बने Initiation, everything. और फिर उनका दीक्षा भी हुआ। That's Prabhupada. और ये है प्रभुपाद जी का। So we'll stop there. तो हम यहाँ विश्राम देंगे। Jagaguru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. भक्ति